Video clear? Please let me know in the comment section. Good morning, Sujal. Good morning, Prachi. Is my audio and video clear? Okay. Okay, so a very good morning to everyone watching this video. I am Manat Sharma from Oliveboard and I'm here with the live mint analysis for all regulatory exams. So we do this live mint analysis every Monday, Wednesday and Friday, wherein I take up some important articles from the live mint and then we discuss it, linking it to the static portion. Okay, so before I begin, if you want to download the YouTube PDF, any YouTube PDF, any class on YouTube, and you want to download the PDF, you can do it from the Oliveboard app. What you have to do is you have to download this Oliveboard app and go to the courses section over here. When you go to the courses section, you will find another section separately mentioned, which is about YouTube class PDFs, and you can download it from here. Okay? Alright, then let's not waste time and let's begin with our session. So, the first important news: India may set quota for crude imports from US. Now, like we know about import tariff, right? Similar to that, or not exactly similar, but on those lines, we have another concept of import quota. So, I have a question for all of you. What is the difference between a tariff and a quota? What do you mean by an import quota? First of all, we need to understand the meaning of this word. What is it? Good morning, Ankit. What do you mean by import quota? So we hear what is the news that on US crude imports, the crude oil imports that we do from US, we are going to set a quota on that. So what do you mean by this import quota? Tariff, I'm sure you know that tariff we say when we charge a tax on imported products. Right? Whenever we charge a tax on imported products, that is what is called an import tariff. Right? So what is an import quota? Good morning, Pratiksha. Yes. So Ankit is saying tariff is tax imposed. Exactly. So the tax imposed on the imported products is what? Import tariff. Right? So what do you mean by quota? So Sujal is saying limits. So limits on what? Limits, right. Limits on what? Any one of you. Pratiksha, Ankit, Prachi, anyone. Sujal, limits on what? Yes. So basically, when we set certain limits on the quantity of goods imported. So here we are, we are not talking about, charging a tax. We are saying that we are going to import only this much quantity from US. Okay. Now, what is this news about? This news is that we are going to increase this quota. We are going to increase this quota of crude oil imports from the US. This is what is the news. So let's dive into this topic. Yes, Ankit, a specific limit on imports, right? I hope you understood. We should know this basic difference between an import tariff and an import quota. So tariff is when you charge a tax. This, okay. Tell me one thing. Why do you think? I've already told you that import tariff is when we charge a tax on imported products. Quota is when you set certain limits on the quantity. What do you think is more beneficial out of these for the government? आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट के लिए इंपोर्ट टैरिफ लगाना ज्यादा बेटर रहता है? दिस इज वेरी जनरल एप्लीकेशन बेस्ड दैट आई एम आस्किंग. इससे रिलेटेड नहीं है, इस न्यूज से रिलेटेड नहीं है. इन जनरल सेंस आपको क्या लगता है कि अगर हमने कोटा लिमिट लगाया, दैट इज गोइंग टू बी मोर बेनिफिशियल फॉर द गवर्नमेंट, या फिर चार्जिंग अ टैरिफ इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर द गवर्नमेंट? Just an application based question. What do you think? Anyone?
So Sujal is saying tariffs. Why? Why do you think tariffs are better? Why do you think tariffs are better? Support your answer with with some evidence or something. Why do you think tariff is better for the government? Exactly, because in case of tariff, it is going to generate revenue for the government, right? It is going to generate revenue for the government. So this is kind of more beneficial. But here, what we're talking about is we're talking about quota, import quota over here. Okay. Now, India is setting a quota on West Texas Intermediate crude oil. Now, what is this West Texas Intermediate crude oil? Now, see, when we talk about crude oil, from the place that it is being extracted, जहां से हम इस crude oil को extract कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमने क्रूड ऑयल को नेम दे दिया. फॉर एग्जांपल हम यूएस की बात कर रहे हैं, तो वेस्ट टेक्सास से हम ये एक्सट्रैक्ट करते हैं. दिस अ प्लेस इन यूएस, तो यहाँ से हम क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं. दैट इज इसका क्या नाम हो गया? वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल. Ajay, in the previous one of the previous live mint analysis classes only, we talked about Brent crude also. So my question to you is, ये Brent crude, if you have attended my live mint analysis on a, if you're attending it on a regular basis, you will know कि ये Brent crude हम कहाँ से extract करते हैं? Anyone? From where do we extract this Brent crude oil? हाँ जी, Ankit says more import, more tax, right? Tax revenue, right? So my question here is, ये Brent crude oil हम कहाँ से extract करते हैं? Which place? ये तो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट तो हो गया, टेक्सास यूएस, है ना. ब्रेंट क्रूड, फिर वन इज योर दुबई क्रूड. दुबई क्रूड तो हो गया यूएई से. तो यूएई से जब हम क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसे हमने बोल दिया दुबई क्रूड. यूएस से वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट. ब्रेंट क्रूड इज फ्रॉम एनीवन? डू यू रिमेंबर? एनीवन? So this is extracted from the North Sea. Okay, so go and read about this. This is your homework. Go and read about these types of crude oil just for your knowledge, and sometimes to read the newspaper also, you should be knowing about this. Okay. So now India, what is it doing? It is going to set a quota for West Texas Intermediate crude oil imports from United States. So right now we know that there are bilateral trade negotiations going on between India and US, right? So we are talking about setting an import quota. All right. This is going to increase the share of US crude oil in India's import basket. So we are trying to increase this import quota. So this is so that these potential trade tariffs which are set by US. So from April they are going to be levied. So to to counter that, you can say, to avoid those potential trade tariffs, this is one of the move of our government. ठीक है. अगर हम करंट शेयर की बात करें, then US crude in India, अगर हम इंडिया के इंपोर्ट्स की बात करें, यूएस क्रूड 4.53% है ऑफ द क्रूड ऑयल इंपोर्टेड बाय इंडिया, एंड यूएस इज द फिफ्थ लार्जेस्ट सप्लायर. और अगर कोटा इंप्लीमेंट हो गया, तो ये शेयर ऑफ यूएस इंपोर्ट्स विल इंक्रीज. Okay, this is to strengthen trade ties, avoid tariffs. Currently, 4.53% of India's crude imports is from the US. अभी अगर हम लार्जेस्ट सप्लायर्स की बात करें, देन रशिया एंड यूएई, दे आर करंटली इंडियाज टॉप क्रूड सप्लायर्स. तो अभी तक कौन है? रशिया एंड यूएई. यू शुड रिमेंबर दिस. ओके. कतर, अब यूएस की अगर हम बात करें, वी टॉक अबाउट लिक्विफाइड नेचुरल गैस. सो यूएस इज द सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर. फर्स्ट पे कौन है? कतर. सेकंड पे कौन है? यूएस, इन केस ऑफ एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई. Now, after setting this quota, से क्या होगा? यूएस के एनर्जी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे. This will ensure a more diversified and strategic energy supply in the country. Okay, I hope you understood this news. So try and solve this question. Which of the following is the primary reason India is considering a quota for WTI crude oil imports from US? What is the primary reason? To reduce dependence on Russian oil, to avoid trade tariffs and strengthen bilateral ties with the US, to replace Brent crude as the global benchmark,
to promote renewable energy sources, to reduce oil consumption in the country? What is the answer? Hurry up, I want all of you to answer quickly. So all of you are saying Sujal, Ankit, Prachi, B is absolutely the correct answer, to avoid trade tariffs and strengthen bilateral ties with the US. Acha, इसी से related we have another news in the newspaper, fixed quota for US oil imports on the cards. So we are talking about setting a fixed quota for US oil imports, right? So US might become India's top supplier. So US is pushing for more oil and gas exports to reduce trade deficits. Now there's a trade deficit in US. So US is doing this to curb this trade deficit. That is why it is trying to export more, and that is why we are going to levy a quota. We are going to increase the import quota from US. Okay. So basically, there are sanctions also on Russian oil. So this is also one reason why imports have increased from US. So more oil and gas production to be done by the US. We've seen this, right? Okay, and LNG gas, we know that US is the second largest supplier. So this is the news. Why are oil imports from US increasing? So this is the question again. India has imposed sanctions on Russian oil. US oil is cheaper than Middle Eastern oil. Russian oil supplies have been hit by sanctions. US has become India's top oil supplier. Indian refineries are designed specifically for US crude. What is the answer to this question? What is the answer to this question? So this was actually in two newspapers, right? So that is why we have different news related to this, but I thought I should add it over here. So tell me, what is the answer to this question? Why are oil imports from US increasing? Ankit is saying D. US has become India's top supplier. It has not yet become. It is fifth largest supplier, Ankit. It is fifth largest supplier. So it is not going to be D. Prachi says B. No, it is not even B. Sujal is saying C. Yes, C is the correct answer. So here we have seen that imports from US have increased due to sanctions on Russian oil. So we have seen that there are sanctions also on Russian oil, because of which these US imports have increased. This is also one reason. One reason is that to avoid this tariffs, India is also trying to increase the quota. Plus, US has trade deficit, so US wants to curb this trade deficit, and for that it is trying to increase its exports to other countries. Okay. So is it clear, Ankit? Prachi, it's not B. The answer is C. Russian oil supplies have been hit by sanctions. Chetan, right? Medha, it is not B. I hope it is clear. I hope it is clear now. Okay. Chaliye, next. Rural jobs signal stalling recovery. Rural job scheme signals slowing revival. Now let's see what this news is about. Here we are talking about this Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. We are talking about this act that people who are demanding jobs under this Manrega. Okay, my question to you: when was this Manrega launched? When was the scheme launched? Atithi, at least previous 6 months for the exam. News of the previous 6 months. Okay, Atithi? So you have to cover the current affairs of the previous 6 months. That is going to be enough. So my question was that Manrega was passed in which year? Exactly in 2005. Very good. Very good. Sujal, Ankit, Prachi. Good. Okay, so under this Manrega, 100 days of rural employment, 100 days of employment is guaranteed by the government. And if in case, this employment is not provided, if someone is seeking work under this act and it is not provided to the person, then employment benefit will be provided to that person who did not get a work even after asking for work under this act.
So your homework here becomes that you have to read about the details of MG Narega. Okay, this becomes your homework. So what is the news here? That people who are demanding jobs under this act, it has increased. Okay, so we see that the number of people who are seeking work under this scheme increased to 26.56 million in February. So 26.56 million people are seeking work under this scheme. So the reason might be seasonal factors. We know that there is this problem of seasonal unemployment in the country. What is seasonal unemployment? What is seasonal unemployment? Who is going to tell me in the comment section? So we see that there is seasonal unemployment because of seasonal factors. People are seeking work from this act, under this act. Then declining farm and non-farm activities. So there are declining activities in the agriculture sector and increased government spending. Because of that, the people who are demanding jobs under this MG Narega, they have increased. So Chetan is saying unemployment during a particular season. Yes. So there are certain off-season periods and there are certain seasonal periods. In the season, during the season, the demand is very high. Jobs are also high. Employment is also good. And in the off-season off-season period, these people are unemployed. So we see this seasonal unemployment even in the agriculture sector, even in the construction, or you can say the industrial sector as well, right? So for those kind of people, they are seeking work under Manrega. Good morning, Sheikh. Yes, like AC installation, repair jobs, ice cream vendors. Yes, Atithi, exactly. So employed only a period of time in a year, rest time unemployed. Yes, Atithi. So Sujal is asking what should be the opinion on universal income. See, if I give this a take on universal income, I think that this is not a correct choice. I would not say that it is a correct choice. Why? Because it is really going to make people lethargic. It is going to make people lethargic because they will be satisfied with this minimum income that they are getting through this universal income. They are going to get this minimum and they are going to become lethargic, and economic activity is definitely going to slow down. It is going to slow down. This universal, universal basic income concept can be applied in a country which is highly developed. But in a country which is developing, a country which is, underdeveloped, for those kind of countries, universal basic income, I think, is not a good choice. Obviously, there are pros and cons to that, that we will be able to solve the problem of poverty, etc. Right? The basic needs are going to be met. But this is a short term. I think this is a short term, so long run, it is going to hamper the whole development process, of the country. Right? Okay? Yeah, but Sujal, you eat ice cream in winters as well. I think many people do. But the demand is very less during, the off-season period during winters, right? Okay, so yes, Chetan, it's like a transfer payment. Universal income is universal basic income is that you are universally providing this income to everyone, despite your economic status. You are providing this minimum level of income to everyone, and you're not so when you provide universal basic income, then you're not investing in any kind of scheme. कोई भी वेलफेयर स्कीम में आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ और भी अलग से जो अमेनिटीज है वो नहीं प्रोवाइड हो रही हैं, तो हो सकता है डेवलपमेंट में लैग हो थ्रू दिस यूनिवर्सल बेसिक इनकम. ओके सुजल, ऑलराइट. ओके, सो Manrega job demand increased 26.56 million in February. Seasonal factors can be the answer. Declining non-farm jobs, increased government spending, ahead of the elections. But India's economic growth, here it is also mentioned that India's economic growth has slowed to 6.2% in the last quarter. We know about this. Manufacturing growth, hit a 14-month low. However, we see a rise right now. If you see the PMI in this in the February month, then it has increased, right? But still, manufacturing growth has increased due to mining activities also, right? But otherwise, if we see the overall trend of the previous year, then we see that manufacturing growth is on the lower side. And GDP growth is also lower as projected for this year. So what is one primary reason for the increasing demand for jobs under MG Narega? Growth in the rural economy, increase in private sector jobs,
Seasonal factors and decline in farm or non-farm activities, higher wages offered under MG Narega, reduction in government spending. What is the answer? What is the answer for this question? बताइए. So all of you are saying C, and C is the correct answer. Seasonal factors and decline in farm and non-farm activities. Very good. अच्छा, next important news is electric public transport push faces hurdles as sales decline. So we are talking about EV public transport. We are talking about electrification of the public transport. It is on a decline. It is on a decline. So India's electrification of public transport is slowing down. So this is the news कि public transport पे हम electrification करने की कोशिश कर रहे हैं. वो बहुत ज्यादा वो एक स्लो डाउन में है क्योंकि इलेक्ट्रिक बस सेल्स फाइनेंशियल ईयर 25 में दे शो अ मार्जिनल इंक्रीज. सो जो इलेक्ट्रिक बस सेल्स है वो काफी कम है. दैट मींस वी आर सीइंग दैट इलेक्ट्रिफिकेशन जो हम करना चाह रहे हैं ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दैट इज नॉट हैपनिंग, you know, at the pace that we want. So it is 400 units lower than last year. So सिर्फ 3124 units ही sell हुई है. It is 400 units lower than last year. So you can see this over here. Okay. So government has taken up many efforts. Government has taken up many initiatives. Yes, Priya Darshini, the C was the correct answer. Atithi, Prachi, Sujal, C was the correct answer. Right. Achha, we've had PM e-bus initiative as well. ठीक है, पीएम ई बस इनिशिएटिव भी लेकर आए हैं. बट स्टिल चैलेंजेस आर देयर इन केस ऑफ एलोकेशन, प्रोक्योरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. तो ये प्रॉब्लम है जिस वजह से हम जो इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको नहीं कर पा रहे हैं. ओके, सो डाउन फ्रॉम 400 यूनिट्स. इलेक्ट्रिक बस की जो पेनिट्रेशन है डिक्लाइंड टू 4.72%. सो इट वाज 9.34% in financial year 22, and we see a decline to 4.72%. So you can see there is a huge decline in the use of or the penetration of electric buses. अब जो PM bus initiative था, PM e-bus initiative, according to this we wanted to introduce 10 approximately 10,900 e-buses. but challenges किस चीज में है? प्रोक्योरमेंट में चैलेंज देखने को मिला है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम स्लो प्रोग्रेस देख रहे हैं. राइट. Government has provided certain incentives like and programs like this phased manufacturing program, जिससे हम domestic production of electric buses को boost कर रहे थे. लेकिन फिर भी there are challenges which remain. There are urban road infrastructure issues like in Bengaluru and Hyderabad. That is why we are not able to adopt electric buses. Okay. So this is a setback for us कि हम public transport को electrification करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो नहीं हो पा रही, उस पर progress बहुत slow है. So the question for you is, what is one of the major reasons for the slow adoption of electric buses in India? Why is there a slow adoption of electric buses in India? Lack of government initiatives, ऐसा तो नहीं है, because we have government initiatives related to that. Higher penetration of diesel buses, increased availability of private cars, procurement and infrastructure challenges, या फिर decline in demand for public transport. What is the answer to this question? Aditi is saying D, Ankit is saying E, Sujal E, Prachi D. So D is the correct answer. Procurement and infrastructure challenges. ये है main reason. Sujal, Ankit, this is the main reason. Decline in demand for public transport major reason है. ये decline क्यों है? क्योंकि decline demand में नहीं है. Decline किस में है? Electrification of buses में. हमने ये तो नहीं कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम डिक्लाइन देख रहे हैं. राइट. सो डी इज द करेक्ट आंसर. प्रोक्योरमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस. रीड द क्वेश्चन केयरफुली कि हम अडॉप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं इलेक्ट्रिक बसेस, क्योंकि उसकी प्रोक्योरमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में चैलेंजेस हैं. ओके. ओके अंकित, सुजल, इज इट क्लियर? सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली बिफोर आंसरिंग.
Now there's another important news related to crude oil कि उसका जो import price है it falls to a 42-month low. तो क्रूड इंपोर्ट की बात कर रहे हैं कि 42 मंथ लो पर है इसका प्राइस. इट इज राइट नाउ $71.20 पर बैरल. अगर हम मार्च 2025 की बात करें then the price of crude is $71.20 per barrel. This is quite less than before. So what is the reason? Slowdown in China's economy, international ceasefire efforts in Ukraine, Donald Trump's policy to boost oil output. So because of these reasons, we see that there is a reduction in the prices of crude oil. लेकिन फिर भी our domestic fuel prices, they may not necessarily decrease, क्योंकि जो हमारा domestic fuel prices है, they are not linked to the global prices basically. तो इसमें ये बोल रहे हैं कि बेशक ये import price has fallen to 71.20 per barrel since August 2021. ठीक है, तो India imports over 88% of its crude oil, so it is highly dependent on this global price fluctuations. Then there are certain geopolitical factors like the Russia-Ukraine war, Israel-Hamas conflict. उस वजह से higher crude prices थे पहले. ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हायर प्राइसेस थे, लेकिन अब वी सी दैट देयर इज अ डिक्लाइन इन द प्राइसेस क्योंकि चाइना में स्लो डाउन हो रहा है, यूएस अपने आउटपुट को बूस्ट कर रहा है, ऑयल आउटपुट को. Okay, and if we talk about financial year 25, जो annual average रही थी for this financial year 25, it was 78.49, down from $82.58 in financial year 24 and 93.15 in 23. So you can see that काफी reduction हुआ है and हम decrease देख रहे हैं oil prices का. Now the retail fuel prices, जो retail fuel prices है in India, they are not aligned with the global prices, इसलिए ये decrease in price might not affect our retail prices. ठीक है, बट एक्सपर्ट्स ने फिर भी कहा है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनको रिड्यूस करना चाहिए है, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को रिड्यूस करना चाहिए है. ओके, सो दिस इज व्हाट इज द एक्सपर्ट व्यू. So what is the main reason for the recent drop in crude oil import prices? तो क्या रीजन है? Increase in India's domestic oil production, rise in demand for crude oil globally, slowdown in China's economy, strengthening of Indian rupee, or decrease in crude oil imports by India? What is the answer to this question? Aditi is asking, should I make notes of these lectures? See, Aditi, I don't think you should waste time in making notes. Just download these PDFs, because see, I try to explain the news. So obviously, if you just read out and read the MCQs only, or just read out the entire PDF, over a period of time, if you keep reading it, then it will be easier for you. But I would say do not waste time in making notes. But yes, if you like making notes and if you think that notes are better off for you, how many PDFs are you going to collect? So what you can do is, not during the lecture, even during the lecture, if you want, to quickly make very short notes, like in 1 or 2 lines you can write down the notes. But it is beneficial that you download the PDF and just revise it. Okay, so Atiti, you can download the PDFs on the Oliveboard app. So I always explain it in the starting of the class. You can download the Oliveboard app. So you have to download the app. This won't be available on the website. On the Oliveboard app, there is going to be a courses section. From there's another section of YouTube PDFs. From there you can download the PDFs. Okay, Atiti? So, if you like making notes and if you think that making notes is going to help you revise, then you can do that. That also very short, very crisp notes. For example, if we have this entire class, your notes should be on 1 page. So this is entire class. You have around 50 to 60 slides. So that should be on 1 page for quick revision later on. Okay? Fine. So C is the correct answer. Slowdown in China's economy. Absolutely correct. Okay? Now, India cuts China bulk drug reliance. So now that means we are moving towards a more self-reliant India. We are trying to increase domestic production of bulk drugs. Okay, so bulk drugs. Anyone, do you know what are bulk drugs? What is the meaning of bulk drugs? Anyone?
What do you mean by bulk drugs? So let's proceed the news. Then we are going to understand this. Okay. So here you can see that bulk drugs accounted for 63% of the total pharmaceutical imports in the country. So you can see that we are importing a lot of this bulk drugs, and now we are trying to increase the domestic. We are going trying to increase the domestic production of these bulk drugs. So bulk drugs and active pharmaceutical ingredients. What are these? Active pharmaceutical ingredients are those when we talk about a medicine. If there is an ingredient in a medicine, okay, if there's an ingredient in a medicine, for example, there's a medicine, there are many ingredients, say 5 to 6 ingredients, but an active pharmaceutical ingredient is one which has the major impact. So if you're going to take that medicine, उसी एक ingredient पे आपका major, जैसे सपोज आपकी पेन रिलीफ है, तो सिर्फ वो एक या दो ingredients ऐसे होंगे active pharmaceutical ingredient एक medicine के अंदर, जो मेजर काम करेंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल आपको पेन है, तो आपकी पेन रिलीफ में वही एक या दो एक्टिवली काम करेंगे, वही एक या दो इंग्रेडिएंट एक्टिवली काम करेंगे आपको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए. ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ योर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. और ये जो बल्क ड्रग्स है, ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज होते हैं. सो अब इसमें क्या कह रहे हैं, दैट वी आर importing a lot and now we want to increase the domestic production of this. Okay, so I hope you've understood what do you mean by bulk drugs. All right, clear? Okay. Hello, Rajnandan. Hello. Now, this is under this production linked incentive scheme, we are trying to reduce the dependency on China because we import a lot from China related to these bulk drugs and active pharmaceutical ingredients. So, we are dependent on China for the raw materials for this pharmaceutical production. So, what is this news, that we want to reduce this dependency? So the country has begun producing penicillin G, clavulanic acid, and APIs like atorvastatin, sulfadiazine, telmisartan. So these are certain medicines which are active ingredients. These are active pharmaceutical ingredients, in your bulk drugs. So we are trying to increase the domestic production of this. Okay, we want to reduce import reliance. That is what this news is about. So 63% of the total pharmaceutical imports were from China. You can see. Bulk drugs are crucial for producing antibiotics and treating non-communicable diseases. So bulk drugs, basically, they are important for producing antibiotics, and treating the non-communicable diseases like cardiovascular diseases, respiratory disorders, diabetes. So for this, we have bulk drugs wherein, these active pharmaceutical ingredients are, manufactured under this. Okay. So if we see India's export of bulk drugs, it was at $4.709 billion, and imports $4.51 billion. Okay, so we want to reduce this import dependency. And that is why we have the PLI scheme, which was launched in 2020 to promote domestic manufacturing of these key starting materials, drug intermediaries, and APIs. So what are these key starting materials? All these materials that we are discussing here, it is related to active ingredients in medicine. Okay. And 48 projects were selected under this PLI scheme, with 34 approved for bulk drugs. So that is what we are talking about under the PLI scheme. Penicillin G production started in October 2024. Lice Pharma Private Limited in Andhra Pradesh, is going to produce under this. Okay, and clavulanic acid production in Himachal Pradesh, penicillin in Andhra Pradesh. So we are trying to reduce the import dependency. Okay. So which initiative has India launched to boost domestic pharmaceutical production and reduce reliance on China? What is the initiative? Make in India, National Health Mission, Pharma Vision 2025, PLI scheme, or drug import substitution plan? What is the answer?
So Sujal, Atithi, Chetan, Prachi, absolutely correct. Thank you, Sujal. D is the correct answer. PLS. Okay. Then gig workers in India's mobility sector deserve some GST relief. So what is this news related to? It is for the gig workers who are working in the mobility sector. What is this mobility sector? Anyone? What are we talking about over here? Any guesses? We are talking about gig workers here and in the mobility sector. So what do you think we are talking about? Which kind of people? Anyone in the comment section? Tell me, what are we talking about over here? What kind of workers are we talking about? Give me an example. Yes, so Uber, Ola drivers who use online platforms, yeah, right, who are gig workers in the sense that that's not a permanent, very permanent job, but like a temporary job working on an online platform like Uber, we have Ola. So we are talking about these gig workers in the mobility sector, say auto rickshaw drivers who are using Uber or Ola for providing their services. Yes, Chetan, gigs, freelancers. Yes, Tarun, in yeah, gig workers in the sense are you can say influencers and all also, Tarun. But here we are talking about specifically the mobility sector. That means you're talking about the automobile sector, auto rickshaw, for example, or cars who are, related. This is particularly related to mobility sector. So this news is for the mobility sector. In general, what you are saying is absolutely correct. Gig workers are like freelancers. Okay, so there are certain financial challenges, which these gig workers face in India's mobility sector, like auto rickshaw and cab drivers. So, whenever you travel in a cab, there is this problem that these cab drivers face. And I'm sure that, once or twice, or, sometimes what happens is that you might have also heard them ranting about this, कि हमें तो पैसा नहीं बनता, इतना तो होता ही नहीं, and all that. I'm sure, right? You might have heard, because I have also heard in cabs. तो अब यहाँ पे these cab drivers and auto rickshaw, they are facing financial challenges. ठीक है, अब क्योंकि जीएसटी कितना है अभी इन पे 18% on these online platforms. So if you're an auto rickshaw driver, if you're a cab driver and you're using online platforms like Uber and Ola, if you're using such platforms, तो उसमें आपको 18% जीएसटी पे करना पड़ता है, ठीक है, on the mobility services. ठीक है, तो अब so whatever they earn, they have to pay. Whatever they earn, they have to pay 18% GST. ठीक है, तो अब यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं कि इनको रिलीफ देने की जरूरत है, क्योंकि इनकी अर्निंग्स इतनी तो होती ही नहीं है जितना इनको टैक्स देना पड़ता है, जितना इनको जीएसटी पे करना पड़ता है. ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑटो रिक्शास, टैक्सी ड्राइवर्स, टू व्हीलर ड्राइवर्स, all these who work via the online platforms. Now they earn around 80,000 per year, only 80,000 per year, which is not even in the taxable bracket. It is not even under the taxable bracket, because of which they are facing financial challenges. Now what we are saying is कि अब कोशिश कीजिए कि ये 18% काफी ज्यादा है, ठीक है, 18% जो जीएसटी काफी ज्यादा है, इसको कम कीजिए. अब इससे क्या है कि अगर आप इतना ज्यादा टैक्स लगाएंगे तो डिजिटाइजेशन डिस्करेज करेंगी, एंड दिस माइट बी पॉसिबल दैट दीज वर्कर्स हु आर वर्किंग थ्रू दीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, दे माइट नॉट वर्क, दे माइट स्विच टू अगेन द ऑफलाइन ऑपरेशंस, है ना. So that is why the government should consider reducing GST for these gig workers, so that we can promote financial inclusion, digital adoption. Okay, and if we see the number of mobility gig workers, they're expected to rise to 4.3 million by the year 2030. Such kind of statements can help you in your descriptive answer writing. So if you have any question related to this, related to say GST and all, or related to these gig workers, then such kind of statements are going to help you. So just remember it. So 4.3 million by 2030, the mobility gig workers might increase. That is why we need to, think about the GST also, because if you levy such high amount of GST, it is going to discourage these people from taking up the online platforms and working via these online platforms. Okay. So the question is, why is a reduction in GST recommended for gig workers in mobility sector? So why are we recommending a reduction in GST?
Gig workers earn above the taxable income bracket. Most gig workers are self-employed and earn below 80,000 annually. The government wants to increase tax collection. The majority of gig workers work offline and do not pay GST. The finance minister has proposed a new tax exemption for gig workers. What is the answer? On the earnings, Chetan, on the earnings, whatever they earn, they have to pay that GST. Okay, Chetan? Yes, exactly, Sujal. They cancel the ride and then they say that, pay in cash, right? So all of you are saying B, absolutely correct. B is the correct answer. So most gig workers are self-employed and earn below 80,000 annually. So next news is direct tax mop up, 95% of revised. Yes, Tarun, Atithi, Prachi, Sujal, Atithi. B is the correct answer, right? Yes, Chetan. So TDS is basically, Chetan, TDS is charged on the income, right? Here they, apart from that, they pay GST as well. They pay GST as well. So when we pay TDS, it is, cut on a monthly basis on the income, and whatever extra they earn, they have to pay, whatever extra they earn via the online platform, they have to pay this GST as well on that. So that is why it is creating a financial challenge for these people. Okay, Chetan, that is why we are trying to reduce this 18%. We are talking about reducing this 18% GST. Okay, so now here we have direct tax mop up, 95% of revised estimate. So that means we are talking about direct tax collection. Direct tax collection. Okay, so center has collected 21.26 trillion rupees in net direct taxes. So we have almost achieved whatever target we had, whatever target we had in collecting the income tax, we have achieved 95% of that target. So we have collected how much? 21.26 trillion rupees. Revenue from corporate income tax, individual income tax, securities transaction tax, these grew significantly, reflecting strong tax buoyancy and improved compliance. That means people are conforming to the compliance. There is tax buoyant, the tax is buoyant. That is why we see that there is an increase in the direct tax collection. So who's going to tell me? I have explained this. What is tax buoyancy? Quickly tell me what do you mean by a buoyant tax? बताइए, what do you mean by tax buoyancy? What is tax buoyancy? So Suja is saying tax revenue growth with GDP. So right. So as your income increases, as the national income increases, then your GDP should, tax revenue should also increase. That is what is the meaning of tax buoyancy. So when we say that a tax is buoyant, we say that as national income increases, that means as more and more people, add to national income, as more and more people come in the income tax bracket, then accordingly your tax revenue should also increase. So that is what you mean by tax buoyancy. Okay. So I hope you know the difference between a buoyant tax, tax buoyancy, and tax elasticity. So tax buoyancy, that with an increase in tax base means जिसके ऊपर टैक्स लिवाय हो रहा है, यानी कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, अगर जो लोग हैं जो इनकम अर्न कर रहे हैं अगर वो बढ़ रहे हैं, तो उससे आपका जो रेवेन्यू है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, वो बढ़ना चाहिए है. और टैक्स इलास्टिसिटी क्या है? अगर आपका टैक्स रेट बढ़ रहा है,
सपोज 10% से 20% हो रहा है तो आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ना चाहिए है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स इलास्टिसिटी एंड टैक्स बॉयंसी. ठीक है, तो यहाँ पे हम टैक्स बॉयंसी की बात कर रहे हैं. सो अगर हम डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात करें तो 21.26 ट्रिलियन रुपीस का कलेक्शन है. 95% हमने अचीव कर लिया है. ईयर ऑन ईयर ग्रोथ टैक्स रेवेन्यू में 13.1% है, यानी कि पहले 9.9% रहती थी, अब 13.1% है. सो वी सी एन इंक्रीज. ठीक है, देन कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन भी इंक्रीज हुई है. इट इज 7.1% मोर देन द प्रीवियस ईयर. नॉन कॉर्पोरेट टैक्स रेवेन्यू हैज आल्सो इंक्रीज्ड. जो टैक्स रिफंड्स है वो भी दे हैव जंप्ड 33% टू 4.6 ट्रिलियन. दैट मींस द नेट टैक्स ग्रोथ जो आपकी जो डायरेक्ट टैक्स ग्रोथ है वो काफी बेटर हो गई है. Okay, so my question is, what was the key driver of the 56% surge in security transaction tax collections? तो क्या रीजन है कि हमने इंक्रीज किया है टैक्स कलेक्शंस को? इंक्रीज इन कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, हायर इंडिविजुअल टैक्स कंप्लायंस, growth in equity derivatives, mutual fund transactions, reduction in tax refunds, new government tax policy. So we have not read this, but I'm sure you will be able to answer this question. So Sujal, Atithi, Chetan, total responsiveness of tax to increase in GDP. Absolutely correct. So we are talking about securities transaction tax over here, right? यहाँ पे हमने देखा कि जो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स से, इंडिविजुअल इनकम टैक्स से और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स से. तो इंडिविजुअल इनकम टैक्स हम समझ गए क्या है, कॉर्पोरेट से जो हमने इनकम टैक्स लिया वो हम समझ गए. अभी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स से हम क्या समझ रहे हैं? बेसिकली हम इसमें क्या कह रहे हैं कि जो ग्रोथ है इक्विटी डेरिवेटिव्स म्यूचुअल फंड्स इनकी ट्रांजैक्शंस इंक्रीज हुई है, जिस वजह से भी जो क्या है इनकम टैक्स जो कलेक्शन है वो इंक्रीज हुआ है. तो जब हम सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स की बात करते हैं, सिक्योरिटीज क्या होगी? यही इक्विटी डेरिवेटिव्स, राइट. सो ये आपको पे करना होता है, इस पे टैक्स आपको पे करना होता है. कुछ भी इसमें अर्न करते हैं, कुछ भी गेन करते हैं इक्विटीज पे, डेरिवेटिव्स पे, म्यूचुअल फंड्स पे, तो उसमें उस इनकम टैक्स के इंक्रीज की हम बात कर रहे हैं यहाँ. ओके, ठीक है, चलिए. सो यहाँ पे चेतन हैज रिटन हियर कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज द एम्प्लॉयर ना, एंड एनीथिंग रिसीव्ड फ्रॉम सैलरी ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट is taxed under salary no matter what name we give to that receipt, and GST charged on eligible goods and services. See, Chetan, you are right. अब क्या है ना कि जब हम अर्न करते हैं थ्रू दीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, उबर, ओला, इनसे जब हम अर्न करते हैं, ये एक सर्विस है. दिस इज अ सर्विस विच इज प्रोवाइडेड. हाँ, एम्प्लॉयमेंट है, मान लिया कि हाँ उनको सैलरी मिलती है, उस पर टैक्स कटना चाहिए, लेकिन वो एक सर्विस भी है. अब देखिए, अब ये उबर, ओला, दे आर पेइंग, दे हैव टू पे दिस सर्विस टैक्स. इनको ये जीएसटी पे करना पड़ेगा, लेकिन वो फिर इन जिनको सैलरी देनी है, इन्होंने जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स है जिनको सैलरी देनी है, उसमें से भी वो उसे काटते हैं, उस पैसे को काटते हैं. तो इसीलिए इस चीज की बात कर रही है कि जो हम जीएसटी पे कर रहे हैं इन सर्विसेज प्रोवाइड करने में, सर्विसेज एज इन सर्विस ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस. तो ट्रांसपोर्टेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें हमें एक सर्विसेज टैक्स जीएसटी पे करना पड़ता है. उसमें हम ये जो अर्निंग्स होती हैं उबर ड्राइवर्स एंड ऑल की, इससे भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे. ओके चेतन, तो वो 18% है, वो 18% है जो इनकी अर्निंग से ही एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है. ओके, these platform that you are saying, जो एम्प्लॉयर है इन्हीं से ये चार्ज कर लेता है. दैट इज व्हाई दे आर फेसिंग फाइनेंशियल चैलेंजेस. ओके, यस, काइंड ऑफ एन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, राइट. ओके, ओके चेतन, आई होप यू अंडरस्टूड. चलिए, now another news is lower imports narrow the trade gap. So narrow trade gap का क्या मतलब है? ट्रेड गैप या ट्रेड डेफिसिट का क्या मतलब है? जब हम when we minus your imports from exports, तो जो इसके बीच में डिफरेंस रहता है, इसके बीच में जो डिफरेंस रहता है उसे हमने बोल दिया गैप, ट्रेड गैप. यस चेतन, एब्सोल्युटली करेक्ट.
जैसे एंड कस्टमर इम्पैक्ट होता है वैसे ही ये इम्पैक्ट होते हैं. यस, आई होप यू अंडरस्टूड नाउ. आई होप यू गॉट सम क्लैरिटी रिलेटेड टू दिस. ठीक है, तो अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं कि जो लोअर हमने इंपोर्ट्स कम किए हैं, इस वजह से क्या है, जो हमारा गैप है ये कम हुआ है. दिस इज व्हाट इज द न्यूज अबाउट. सो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है इट फेल टू 14.05 बिलियन डॉलर्स इन फेब्रुवरी. सो दिस इज अ गुड थिंग कि हमारा डेफिसिट रिड्यूस हुआ है. इट इज लोएस्ट ओवर द 3 years. एंड इसमें क्या है रीजन, बिकॉज ऑफ ग्लोबल ट्रेड अनसर्टनिटीज एंड यूएस टैरिफ्स. तो क्या रीजन है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट इंप्रूव हुआ है, क्योंकि वी हैव सीन जियोपॉलिटिकल रिस्क, ग्लोबल अनसर्टनिटीज है ना, और राइजिंग यूएस टैरिफ्स है. इस इन दो चीजों की वजह से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बेटर हुआ है. अब इंपोर्ट्स और क्या रीजन है, वीकर ग्लोबल डिमांड है बिकॉज ऑफ अगेन ग्लोबल अनसर्टनिटीज, वॉलेटाइल कमोडिटी प्राइसेस, पोटेंशियल रेसिप्रोकल टैरिफ एक्शंस, लाइक दैट. गुड चेतन, आई होप इट इज क्लियर नाउ. यू आर वेलकम. ठीक है, तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की अगर बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट मर्चेंडाइज वी आर टॉकिंग अबाउट गुड्स का एक्सपोर्ट्स, राइट. सो 36.91 बिलियन डॉलर्स, स्लाइटली अप फ्रॉम 36.43 बिलियन डॉलर्स, यानी कि हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुए हैं इन जनवरी. मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स डिक्लाइन हुए हैं टू 50.96 बिलियन. गोल्ड इंपोर्ट्स आल्सो ड्रॉप्ड, ऑयल इंपोर्ट्स आल्सो ड्रॉप. तो हमने एक ड्रॉप देखा है इन दी इंपोर्ट्स, ओवरऑल इंपोर्ट्स. हाँ जी, जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत है. सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हमारे डिक्रीज हुए हैं, सॉरी इंक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए. सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज टू 35.03 बिलियन डॉलर्स और सर्विसेज इंपोर्ट्स कम हुए हैं 16.55 बिलियन डॉलर्स. और मेजर एक्सपोर्ट ड्राइवर्स क्या है जो एक्सपोर्ट हमने किन चीजों में ज्यादा किया है, इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, pharmaceuticals, gems and jewelry. So you should remember this also. This is going to help you write answers also, and आपको क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा कि मेजर हम एक्सपोर्ट्स किन चीजों में कर रहे हैं, इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, जेम्स एंड ज्वेलरी. और हमारे मेजर इंपोर्ट्स क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अगेन, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, गोल्ड एंड मशीनरी. ठीक है. So what was one of the key reason for India's trade deficit narrowing in February? क्या रीजन है क्यों ट्रेड डेफिसिट नैरो हुआ इन फरवरी? इंक्रीज इन गोल्ड इंपोर्ट्स, सर्ज इन सर्विस एक्सपोर्ट्स, डिक्लाइन इन मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स, expansion in crude oil imports, higher foreign demand for Indian goods. What is the answer? What is the answer? इंक्रीज इन गोल्ड इंपोर्ट्स, तो ये नहीं है. सर्च इन सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, तो ये भी हो सकता है. डिक्लाइन इन मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स, ये भी हो सकता है. सो यहाँ पे देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू. एक्सपेंशन इन क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स, ये भी नहीं है. हायर फॉरेन डिमांड फॉर इंडियन गुड्स, ये भी नहीं है. तो देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू. बट मेजरली यहाँ पे आंसर डिक्लाइन इन मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स. हमारे इंपोर्ट्स क्योंकि कम हुए हैं, मेजर ये रीजन है. हमारे इंपोर्ट्स कम होने की वजह से ट्रेड डेफिसिट नैरो हुआ. जो मेजर रीजन है वो सी है. बट या दिस कैन आल्सो बी, बट मेजर रीजन क्या है, हमारे मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स में डिक्लाइन होने का. ठीक है, तो मेजर रीजन ट्रेड डेफिसिट नैरो क्यों हो रहा है, नैरो कब होगा, जब हमारे इंपोर्ट्स कम होंगे, है ना. डेफिसिट हमारा कम कब होगा, जब हमारे इंपोर्ट्स कम होंगे. तो हो सकता है ये भी आंसर, लेकिन जो डायरेक्ट अगर आंसर आपको लिखा है यहाँ पे डिक्लाइन इन मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स, तो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. बिकॉज जब हम ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं तब हम इसमें कहते हैं कि हमारे इंपोर्ट्स ज्यादा है इसीलिए ट्रेड डेफिसिट हो रहा है. तो अगर ट्रेड डेफिसिट इज नैरोइंग, तो हम उसमें क्या कहेंगे, डिक्रीज इन द मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स. ओके सुजल, ठीक है. सो यस अतिथि प्राचीक, सी इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड. अच्छा, यहाँ पे लिखा है होलसेल इन्फ्लेशन अप इन फेब्रुवरी ऑन स्टिकी फ्यूल पावर प्राइसेस. अब हमने कुछ टाइम से हम रिटेल इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, है उसमें हम एक डिक्लाइन देख रहे हैं. लेकिन यहाँ पे होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई है. तो जब हम होलसेल लेवल पे जब हम प्राइसेस
का इंक्रीज या डिक्रीज देखते हैं, दैट वी डू थ्रू द होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हम रिटेल लेवल पे चेक करते हैं, सीपीआई, और होलसेल लेवल पे डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो वो इंक्रीज हुआ है टू 2.38% इन फेब्रुअरी। तो पहले कितना था, 2.31%, now it has increased to 2.38% because of slower contraction in fuel and power prices, rise in manufactured product prices। तो क्या रीजन है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं और फ्यूल और जो पावर के प्राइसेस है। अब हम देख रहे हैं रिटेल, जब हमने रिटेल इन्फ्लेशन की बात की तो हमने फूड प्राइसेस में डिक्लाइन की बात की, तो डिक्लाइन तो हुआ है, लेकिन होलसेल लेवल पे अभी भी अगर हम देखें तो अभी भी उतना डिक्लाइन नहीं हुआ है, ये अभी भी हाई ही है। अब अगर 1000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल हाई, अगर ये 900 हो जाए तो हम इसमें बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन फिर भी हाई है ना, जस्ट टू ब्रिंग इन अ कॉन्ट्रास्ट, थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरह आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। तो फूड प्राइसेस की वजह से, फ्यूल की वजह से होलसेल जो इन्फ्लेशन है इट हैज इंक्रीज्ड। मेजर कंट्रीब्यूटर्स क्या है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट प्राइसेस, स्टिकी फ्यूल एंड पावर प्राइसेस की ज्यादा कम उसमें नहीं हो रहा, अभी भी हाई है। फूड प्राइसेस हाई है, उस वजह से ये प्रॉब्लम दिखने को मिली है। ओके, so the fuel and power prices, they have fallen, but still they are high, ठीक है। वेजिटेबल इन्फ्लेशन फेल टू 5.80% इन फेब्रुअरी, लेकिन स्टिल इट इज हाई, दैट इज व्हाई हमारा जो डब्ल्यूपी आया है वो एट अ हायर साइड आया है। सीरियल प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, तो वॉलेटिलिटी काफी है कमोडिटी प्राइसेस पे ड्यू टू ग्लोबल ट्रेड वॉर्स, टैरिफ इंप्लीमेंटेशन, इन सब चीजों की वजह से हमने डब्ल्यूपीआई में एक हमने होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन ऑन अ हायर साइड देखी है। ओके, सो व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन for the rise in India's wholesale inflation in February? Higher food inflation, increase in manufactured product prices, rise in crude oil prices, surge in fuel and power inflation, strong demand for exports. What is the answer? हाँ जी अतिथि, रिटेल इन्फ्लेशन 3.61%, so it is at a lower level. Yes. So what is the answer? प्राइमरी रीजन क्या है, राइज इन इंडियाज होलसेल इन्फ्लेशन, हायर फूड इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट प्राइसेस, rise in crude oil prices, surge in fuel and power inflation, and strong demand for exports. The answer is increase in manufactured product prices. This is the major reason. प्राइमरी रीजन तो यही है। फूड इन्फ्लेशन तो हम देख रहे हैं रिटेल लेवल पे तो कम हुआ है, लेकिन इट इज स्टिल हाई, ये हमने बात की है, कम हुआ है बट इट इज स्टिल हाई। लेकिन जो मेजर रीजन होलसेल इन्फ्लेशन में है वो तो इंक्रीज इन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट प्राइसेस है, ये भी रीजन है फूड इन्फ्लेशन का। लेकिन फूड इन्फ्लेशन को हम डायरेक्टली सीपीआई यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन में देखते हैं, वो हम एक डिक्लाइनिंग साइड पे देख रहे हैं। दो डिक्लाइन है, रेट में डिक्लाइन है, लेकिन फिर भी हाई है, ये कह सकते हैं। लेकिन जो मेजर रीजन जब हम होलसेल इन्फ्लेशन की बात करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट प्राइसेस। आप यहाँ देखें, so we have seen major contributors, higher manufactured product prices, elevated food prices भी सही है यहाँ पे, हायर फूड इन्फ्लेशन भी हम कह सकते हैं। लेकिन अगर आप रीसेंट ट्रेंड देखें सीपीआई में या फिर रिटेल इन्फ्लेशन में, तो उसमें हमारा जो फूड इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा कम हुआ है, बेटर हुआ है, राइट। फूड में भी दो हायर है फॉर कैलकुलेटिंग होलसेल, लेकिन मेजर रीजन आप इसे देखेंगे। अब देखिए इस टाइप के कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस, इस टाइप के कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं इन दी एग्जाम, राइट। दीज काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज। अब देखिए आपके पास टू ऑप्शंस है जो हो सकता है करेक्ट हो, बट यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस आते हैं यहीं पे, जैसे आपने सिलेक्ट किया, दैट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस, किसने बी सिलेक्ट किया, किसने ए सिलेक्ट किया, ऐसे ही कंफ्यूजिंग आते हैं। तो आपको सिर्फ ऐसे डायरेक्टली नहीं पढ़ना है, रिलेट करके भी आपको पढ़ना है, कोरिलेट करके भी आपको पढ़ना है। ओके, सो ऑल ऑफ यू गिवन मी आंसर ए, ये भी आंसर है, लेकिन जो मेजर रीजन है यू हैव टू सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट आंसर आउट ऑफ दीज टू, है ना। तो एलिमिनेट करने की कोशिश करें। अब राइज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस ये नहीं है, सर्ज इन फ्यूल एंड पावर इन्फ्लेशन, फिर तो ये भी हो सकता है आंसर, राइट, फिर तो ये भी हो सकता है। लेकिन हमने इसमें भी देखा कि वॉलेटाइल है, लेकिन इसमें भी हमने अभी काफी न्यूज देखी है, इसके प्राइसेस में भी डिक्लाइन है, हम रिटेल इन्फ्लेशन में जब पढ़ते हैं। सो यू हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन,
आपको लगेगा ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, हो सकता है आपको लगेगा, बट आपको सिलेक्ट करना है द बेस्ट आंसर. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ. ठीक है. अच्छा, this is the last news for today, which is your India plans to take over local polio surveillance from World Health Organization. Now, first of all, let me give you a homework. You are going to read about World Health Organization. ठीक है, WHO के बारे में पढ़े, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कब इस्टेब्लिश हुआ है, मेजर फंक्शंस क्या है. Read about this. This is going to be your homework for today. ठीक है, डोंट फॉरगेट टू डू योर होमवर्क. WHO के बारे में पढ़ें. तो अब इंडिया बिकेम पोलियो फ्री इन 2014 और इसमें WHO का बहुत बड़ा रोल रहा है. बट नाउ इंडिया सेज कि अब आई थिंक वी आर गुड इनफ, हम वी आर एट अ बेटर पोजिशन, तो हम ये जो पोलियो सर्विलेंस है, पोलियो से रिलेटेड कोई भी सर्विलेंस करनी है, तो अब हम WHO से हम क्या कर रहे हैं, इंडिया इज गोइंग टू टेक इट इन इट्स ओन हैंड्स. तो जो ये पोलियो सर्विलेंस की एक्टिविटीज है, ये WHO पहले उनके हाथ में थी, इंडिया में कंडक्ट करना पोलियो सर्विलेंस एक्टिविटीज. ठीक है. अब इसमें क्या कर रहे हैं कि हैंड ओवर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल. तो अब इंडिया क्या बात कर रही है कि वो WHO से जो ये जिम्मा है पोलियो सर्विलेंस एक्टिविटीज करने का, वी आर गोइंग टू टेक इट फ्रॉम WHO, और हम किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NSDC को देंगे. तो ये 30 year old एक जॉइंट इनिशिएटिव था ऑफ WHO एंड इंडिया. इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था टू मेक इंडिया पोलियो फ्री इन द ईयर 2014. ठीक है. सो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, अब ये इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम जो है ये प्रोग्राम अब इंडिया के हाथ में आ जाएगा विद NSDC. ठीक है. सो अब NSDC एक मेजर NSDC is going to take up this program. कौन सा प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम. इट इज गोइंग टू बी विद NSDC. पोलियो फ्री हम कब हो गए थे, 2014. ये आपको पता होना चाहिए, आपको डायरेक्ट MCQ ऐसे आ सकता है, इंडिया बिकेम पोलियो फ्री इन विच ईयर, ऐसे क्वेश्चन आ गया. अब आर्टिकल ऐसे आया, लेकिन आपको क्वेश्चन बीच में से आ सकता है. ओके, ट्रांजिशन कब शुरू होगी, ऑन 1st April. फ्रॉम 1st April इट इज गोइंग टू स्टार्ट. फाइनेंशियल फैक्टर इज नॉट एन इशू. ठीक है, क्योंकि इंडिया की जो फंडिंग है वो क्योंकि इंडिया ही खुद जो WHO की पोलियो सर्विलेंस है वो इंडिया ही खुद वो फंडिंग कर रहा था इसकी. सो इट इज नॉट दैट वी हैव दिस मनी प्रॉब्लम या फिर हमें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हमें वो प्रॉब्लम नहीं है. WHO के जो वर्कफोर्स और टेक्निकल सपोर्ट जो हमें मिलता था फॉर पोलियो सर्विलेंस वो रिड्यूस हो जाएगा बाय 30% फ्रॉम April 1. तो हमें मेजरली जो बेनिफिट मिलता था WHO के साथ जॉइंट इनिशिएटिव में, दैट वाज रिलेटेड टू द वर्कफोर्स एंड टेक्निकल सपोर्ट. बट नाउ इंडिया थिंक्स दैट वी आर गुड इनफ, नाउ वी कैन टेक अप दिस सर्विलेंस ऑन आवर ओन. इसीलिए हम April 1st से इनका जो मेजर काम है WHO का वो रिड्यूस हो जाएगा एंड वी आर गोइंग टू focus on giving this responsibility to NSDC. ठीक है. लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान वहां पे पोलियो के केसेस अभी भी हैं, तो ऐसा ना हो वो इंडिया में स्प्रेड हो जाए बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू दीज कंट्रीज. ठीक है. सो दीज आर सर्टेन कंसर्न्स रिलेटेड टू पोलियो. अब वी हैव बिकम पोलियो फ्री इन 2014, लेकिन पोलियो इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान इज स्टिल देयर. सो दिस इज अ चैलेंज रिलेटेड टू पोलियो. ठीक है. सो व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर इंडिया टेकिंग ओवर पोलियो सर्विलेंस फ्रॉम WHO? To reduce financial dependence on WHO, increase in polio cases in India, due to WHO's decision to cut funding for polio surveillance, to achieve self-sufficiency in disease surveillance, lack of proper health infrastructure in India. So what is the answer to this question? हाँ जी, सुजल जॉर्जिया मलेरिया फ्री, चेतन अर्जेंटीना एज वेल, राइट. So Atithi is saying Geneva, Switzerland. Yes, the headquarter of WHO is in Geneva, Switzerland. Yes. So just read about this in detail, okay? So all of you are saying D, absolutely correct, to achieve self-sufficiency in disease surveillance. All right.
So thank you so much for watching. That's it from my side. These were the important articles that I wanted to discuss with you. I hope this session was fruitful for you. I hope you've understood the meaning of certain terms, certain important factors, and I hope that you yourself have read the newspaper, and I hope you have also you were also able to identify the important news if you are reading the Live Mint newspaper. So I hope this session was helpful for you. If there's anything that you want to ask, you can ask me in the comment section. And for those of you who want to download this YouTube PDF, you can download it from the Oliveboard app. वहाँ पर जाएं, वहाँ पे courses section पर जाएं, and वहाँ पे YouTube class PDFs का एक section होगा, so वहाँ से you can download the PDFs. Okay, this is for Atithi. This is how this courses section will be there, and वहाँ पे आप YouTube class PDFs download कर सकते हैं. Okay, anyone, any doubt? That's it from my side. If there's anything that you want to ask, you can ask me in the comment section. Otherwise, I will take your leave. Okay, Sujal. Thank you. You're welcome, Atithi. So we meet up every Monday, Wednesday, and Friday at 8 a.m. So you can attend this class whenever you want. Okay, so we do this live mint analysis every Monday, Wednesday, and Friday. Okay, so for those of you who want to continue the session, you can come here every morning at 8 a.m. Monday, Wednesday, and Friday. We conduct this session. Okay. Alright then, thank you so much for watching. Take care, have a nice day. All the best to all of you. Keep studying. I'm ending the session here. Thank you.